Okay, so I'm guessing it's start now. हाँ Yeah. एक बार चेक कोई क्लियर कर सकता है चेक की क्या कहते हैं आवाज़ सही जा रही है कि नहीं मैं एक बार देख लूं फिर भी मूवी नहीं, यहाँ पे प्ले नहीं हो रहे। अभी प्ले होगा Okay. so, हाँ क्लियर है मैंने चेक कर लिया तो हाँ, वी हाँ आर लाइव। हाँ वी आर वन तो 3 लोग तो है 6 वॉचिंग है टोटल अगर मतलब कि 2 मिला दो हटा के सो चलो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज हम लोग नए पॉडकास्ट के साथ या क्यू एन ए सेशन के साथ आए हैं इस बार हमारे साथ गेस्ट है किससे एंड ये लोग भी हमारी तरह ही मतलब कि स्मॉल पॉडकास्ट बनाते हैं और लॉन्ग पॉडकास्ट भी बनाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मेरे को अभी लिटरली 5 मिनट पहले पता चला है स्ट्रीम से पहले सो आई एम ग्लैड टू हैव यू बोथ एंड शिवन तुम भी थोड़ा इंट्रो दे सकते हो वैसे Hello everyone. Thanks to you, ओके Vaibuster. इतना रफ मतलब कि इंट्रो मैंने आज तक नहीं देखा है बट अब आप दोनों भी कर सकते हैं अपना अपना दे सकते हैं जैसे देते हैं Sanskar, yeah, go Hey, ahead. yeah, hey guys, what's up? ओह शिट मेरा काम So है my हाँ name is Sanskar, दोनों लड़का Sanskar, and I'm from Team Kisse, and this is my fellow host, Dishang Timle. You can go. So, hello, and Kaskar, this is the Shantibla. Welcome back to Vaibuster channel. I think so. We are gonna have fun today, and आई let's गेस सो start. यस सो नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि नाम हम तो बता दिया एज क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा So मेरा is 21 है. I'm an BMM student last year, and by hobby I do is making videos on YouTube like content creator. I make movies also like. Uh, you can say like I'm a filmmaker basically, and you can also check my YouTube videos as well. Sanskar नाम है channel का, where I make narrative based storytelling videos, which are basically my life. I'm documenting my life. Nice, nice. तो भाई सेपरेट चैनल तू So, बता। what's प्रोड्यूसर up? What's up? So, let me introduce you properly. Okay. So, I'm Dishang. Okay, Dishang Dimle. And my genre is similar to Sanskar, but I am more of on the shorter side if I make vlogs, and I love longer side because there is more time to express and talk in longer format. And yeah, What's up? by that I am What's up? So graduated let and me let I me have let me done my introduce you master's in properly. Okay. PhD in film. So I'm Dishang. Okay, So yeah, Dishang uh, Timle, I have done and a my PhD on genre films is and similar VFX. to Sankar. So that's a long process and my education wise. Now I'm seeking masters and PhD in psychology. So that's what I'm doing currently. So you can say there is a spectrum of things Of which are going on right now. vast And vast like we have also been doing freelance like हम लोग video editor भी है. Mhm. He's a proper video editor. मैं designer, illustration, Photoshop. I do basically like most of the thing. Like I am a web developer also. Yeah. so या yeah, सिवन क्वेश्चन सेकंड हाँ, आपकी इंस्पिरेशन। um, हम लोग की my my inspiration mostly is you can say फॉर Lord Ram and पॉडकास्टिंग Lord आई सेड Krishna. मतलब कि पॉडकास्टिंग के फॉर हिसाब से पूछ रहा है या हाँ, ना Also, yeah, okay. पॉडकास्टिंग। look, what what guys like? How can आई you just आई एम tell me आस्किंग one thing? Okay, या let's या let's या let's open up. I ओके अभी ओके मैं like you have challenged me. Come on. ओके 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 आओ Which is the best podcast which is written in a form of book and passed along the world, which is changing everyone in every perspective? Name that podcast which is in the written form. And you guys respect it, we Hindus respect it. What it is called? रामायण रामायण। Ramayana and Bhagavad Gita, right? यस या Yeah, so that's what the inspiration should be like. You should write something or you should say something which is like an inspiration to everyone. It's not just like a human which is breathing in flesh and air or land. It's not like that. Inspiration can be a stone also, inspiration can be a TV also, inspiration can be anything. You can get inspired by like a simple bottle also because like you don't know what ideas you can get from where. It's Hmm. just like it comes out of inspiration is
I am inspiring or I am getting inspired. There's no limitations and there is no boundlessness to inspiration. So yeah, Hmm. for me, Lord Ram and Lord Krishna are two biggest inspirations because I feel that there is no one that has changed the entire world in such a way positively than those two humanly gods or like godly humans, you can say, or vice versa. I don't mean or harm any sentences if I'm rephrasing because हाँ, my dialect can be harmful or sometimes I can go in the flow. नॉट अ प्रॉब्लम। Hmm. बंद कर भाई। अच्छा, for me it's like basically motivation can be anyone. There is no limit कि एक या यूट्यूबर है या कोई लाइक सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है. इट्स अपॉन यू कि आप किसको इंस्पिरेशन जैसा देख रहे हैं एंड व्हाट क्वालिटीज यू आर सीकिंग इन. रोल मॉडल के हिसाब से बोल रहे हैं। रोल मॉडल के हिसाब से आई गेस there can be anyone like my parents. I can say like my dad who works hard. Like yeah, I'm very privileged guy who like have this good house, and like most of the time my parents have supported me basically, and mostly my dad. Like जब भी मेरे को उनका जरूरत पड़ा, he has been there with me and has been supporting me. Like अभी ये जो करियर भी मैं कर रहा हूँ, this content creation, uh, like if you see he's from like the 90s. Okay, and वो टाइम पे तो ऐसा कोई नहीं था जो who is doing this content creation या इंटरनेट पे. बट स्टिल ही सपोर्टिंग मी कि हाँ ठीक है, तेरे को मजा आ रहा है, ये चीज करना है तेरे को लाइफ में, which is very different from his age. So yeah. अब तक जितने भी आपने पॉडकास्ट किए हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? और ऐसा ऐसे आपने अभी तक कौन से पॉडकास्ट किए हैं जिसको आपको खुद लगता है कि हाँ, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू एंड फॉर द ऑडियंस? Like, Life changing was, I think so, it was Advait's podcast, which was life changing because it really changed हाँ our हाँ life हाँ. completely, which took a real 360 degree turn and made us realize that we can do more of such content हाँ, and yeah, help people with understand. And I never knew that. I thought these things are common, and this is not common. There are sufferings which are going on. yeah. एंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सफरिंग के वजह से होती है एंड पीपल आर नॉट अवेयर. मेंटल हेल्थ इज एन इशू एंड इट इज अ सीरियस थिंग विच शुड बी एड्रेस्ड. पीपल डोंट एड्रेस दैट. पीपल थिंक इट इज जस्ट अ फन. किसी का ब्रेकअप होना या फिर किसी का लॉस होना, उसकी वजह से डिप्रेशन आना या फिर एंजाइटी आना या फिर प्रॉब्लम्स में फंसना. सो देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. ओके, so Ladwit's podcast was something which was life changing and really inspiring to us also. But our favorite podcast, which is live right now, is I think so Yogesh ka podcast, and Which is the latest one. because we were not stressed out as much as after the hearing the story, and because half of the time what happens is when we connect with the guest and we try to talk to them, there is a problem. Like there is an emotion shared एंड दैट इमोशनल बैगेज को हम लोग को क्लियर करके सामने वाले को हेल्प करना, एडवाइस देना, मेकिंग देम स्पीक लाफ इज अ काइंड ऑफ अ टास्क फॉर अस because I don't know where we can touch and where it can be blasted off. So it's a really huge thing to understand. शिवन क्वेश्चन। हाँ Similar इतना मेरा भी. हाँ, Okay. एक से सेकंड। से से नहीं नहीं नहीं, हाँ आप प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। प्लीज प्लीज हाँ मेरा भी मोस्टली सेम ही है. लाइक इफ यू से लाइफ चेंजिंग, तो वो अद्वैत वाला पॉडकास्ट है. लाइक वहां से किससे को बूम मिला. सो हम लोग ने भी नहीं सोचा था कि अरे पॉडकास्ट ऐसे ऐसे जाएगा. एंड विच व्हाट आई हैव सीन इज कि मोस्टली जो हम लोग टीनेजर्स है, मोस्टली टीनेजर्स ये जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंटरनेट पे, द यूथ, एंड मोस्टली दे आर सफरिंग फ्रॉम रिलेशनशिप, लव, ब्रेकअप, सिचुएशनशिप. एंड आई हैव सीन कि सफरिंग तभी होता है व्हेन यू लाइक इफ सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारे साथ. लाइक वो तुम लोग को वैल्यू, रिस्पेक्ट या प्यार नहीं मिल रहा है, येट यू चूज टू बी विद देम. वहां पे तुम अपने आप को खो रहे हो, खुद का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, एंड वॉक ऑफ नहीं कर पा रहे हो उस बॉन्ड से या रिलेशनशिप से, जो भी अभी सिचुएशनशिप जो होता है. लाइक वी डू कॉम्प्लिकेट द रिलेशंस विद अदर पर्सन.
तो वहां से हम लोग वॉक ऑफ नहीं कर पाते, एंड देन वी स्टार्ट टू हर्ट अस एंड ट्रॉमा हो जाता है फिर तुम लोग को। लाइक मेरे को भी हुआ है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई हैव नॉट बीन इन दिस, बट लेटर ऑन हम लोग को रियलाइज होता है, एंड यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि ये रेड फ्लैग्स है एंड यू हैव टू मूव आउट ऑफ दिस। अगर तुम लोग को वैल्यू नहीं मिल रहा है वहां पे, तुम लोग का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है सामने वाला, या फिर प्यार नहीं कर रहा है, तो देर इज नथिंग इन दिस दैट बॉन्ड। तीन पिलर्स होते हैं मेन, वैल्यू, रिस्पेक्ट एंड लव। अगर तीनों में से एक भी चीज तुम लोग को वहां पे नहीं मिल रही है, तो वाई यू आर बीइंग इन दिस, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशंस एंड अटैचमेंट, तो वो गलत है, तुम खुद को ही हार्म कर रहे हो। एंड बीइंग लाइक एंटरटेन दिस पॉडकास्ट विच इज दिस योगेश वाला, आई विल एग्री विद दिशांक दादा कि सेम है, बट हाँ, लाइक व्हेन आई लाइक द पॉडकास्ट इज बिकॉज कि जब कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा चलता है ना, वेर यू फॉरगेट कि अरे कैमरा है ही नहीं सामने, हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं सामने वाले से, लाइक अभी भी आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइस, लाइक कॉन्वर्जेशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि चार जन बैठे एंड वी टॉकिंग। तो जब वो होता है ना, आई फील कि हाँ, अब ये कॉन्वर्जेशन फोर्स नहीं है, ऐसा इंटरव्यू बेस्ड नहीं है, या फिर लाइक बोलते ना, कुछ करने के लिए नहीं बैठे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड हियरिंग ईच ऑफ अस, हम लोग का पर्सपेक्टिव क्या है। सो या मेरे को एक क्या कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन था वो रिलेशन वाले पे। अगर आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप आफ्टर दैट पॉडकास्ट, मतलब कि इन शॉर्ट नोट थोड़ा सा हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा सर। मैंने बोला ना वही, लाइक इफ आई से, मैं अपना बता रहा हूँ, दिशांगना का हैज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन दिस, बोनस बट पूछो। लाइक व्हाट आई से कि वही कि वॉक ऑफ नहीं कर पाते यार। लाइक अभी सी, मैं एग्जांपल देता हूँ वैभव का ही। इफ वैभव इज इन विद, लाइक वैभव किसी लड़की को प्यार करता है, या फिर लाइक ही लाइक समवन, एंड तभी वो सामने वाली बंदी अगर तुम्हें वैल्यू नहीं कर रही है, लाइक उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, येट यू चूज टू बी लाइक नहीं यार, मेरे को अच्छी लगती है वो, मेरा उस पर क्रश है, जो वन साइडेड सेल्फलेस लव जो बोलते हैं हम लोग, जो करण जौहर की मूवीज में प्रमोट होता है कि हाँ ठीक है वो उसको मिलेगी, फिर भी मैं एक तो अपना करियर सेक्रीफाइस कर रहे हो फ्रॉम 15 टू लाइक से 25, दिस इज समथिंग वेर यू हैव टू रन बिहाइंड योर ड्रीम्स। ठीक है, प्यार कर रहे हो, किसी लड़की के पीछे भाग रहे हो, बट इट इज लाइक कि तुम लोग का एक पार्ट है वो लाइफ का लव। बाकी तुम लोग क्या कर, व्हाट वी डू, मैं तुम लोग भी नहीं मिलूंगा, व्हाट वी डू इज कि हम लोग पूरा रिलेशनशिप को ही अपना पूरा लाइक क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बना लेते हैं, एंड वी जस्ट ट्राई टू रन, तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ शिवेम It's तुम क्वेश्चन similar, I पूछो। think so. हाँ हाँ आप कंटिन्यू करिए, मैं You have नेक्स्ट। learned a lot. You have learned a lot, and आप कंटिन्यू that's करिए। what I think my perspective is also. He Yeah, just correct. like very well. Yeah. वो रॉ पॉडकास्ट है, रॉ सॉरी रॉ लाइफ सेशन, एकदम एकदम रॉ। Okay. हाँ, यू कैन से। हाँ, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अभी तक जो आपकी जर्नी चली है पॉडकास्ट की, उसमें आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा था? Best experience is I think every मतलब experience is a आपको best किसके experience. साथ मतलब वीडियो बनाने में मजा आया? जैसे वैभव है It's तो I can't नहीं नहीं ऐसा नहीं है because like every guest is special, every guest is best, and every guest comes with their own stories and own box of magic. So every now we have to sort out like contacts and we have to finalize guests कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, what is the content they are bringing. So they are like hand picked by us. So we know whatever we are presenting is best for us. That's why we are representing them on Kissey. That's why we started the story. We started the podcast with the name of Kissey, right? कि हर एक का किस्सा रहता है और हर एक का किस्सा ये बेस्ट रहता है. So that's the representation for everyone that should be there. So I can't say कि हाँ बाबा ये है. I guess there is a favorite one, but there is not a special or like something like that कैटेगराइज because नहीं कर सकते कि या इसका या इसका मजा आया, इसका इसका, आई लाइक अंडरस्टैंड। व्हाट नहीं आई से कि मेरे को वो चीज, लाइक इन द होल प्रोसेस ऑफ दिस पॉडकास्ट मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, विच आई एंजॉय की आई गेट टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ पीपल, लाइक या जो यू आर जिसका हर एक करेक्ट। का अपना अपना बैकग्राउंड होता है, हर एक का अपना अपब्रिंगिंग होता है, उसके थॉट्स होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव होते हैं लाइफ को लेके, तो वो आता है करने बात करता है, मेरे को समझ में आता है कि अच्छा इसका थॉट प्रोसेस ये है, ऐसे ऐसे इंसान भी होते हैं who have this थिंकिंग।
उनका अपना जर्नी होता है, सो उतना कनेक्ट करने मिलता है, विच इज बेस्ट। लाइक आप बहुत सीखते हो। लाइक मी बीइंग 20 ईयर ओल्ड, मेरे को अभी से ही अगर इतने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है, दूसरा मेरे को रियलिटी पता चल रही है लाइफ में कि क्या क्या होता है, लोग क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो मेरा If सबसे फेवरेट पार्ट है। if this show, like, if our people, our audience finds out that Sanskar is speaking so much, they're gonna bash him because he doesn't speak on Kissey, and that's a story. That's a thing. He, like, Sanskar is like, okay, yes, and when he speaks in very limited terms. But yes, I think so. That is what it has brought him and has made him grow in a different and vibrant way. बहुत कुछ सीखने मिला है, उससे मेरे को सीखने मिला है. I have engaged my calmness because of him. I am not this calm. I am very, like, you can say, for example, I don't know if it is right to say, but I am a crackhead where I have energy, bro. Let me get this done. And he's like, calm down, bro. And like, so I just, as I said, ki, there are two sides. One is Yin and like yang. the, Yeah. yeah, like, I am the source of energy with calmness. He is the source of calmness with energy. So that goes along and along. So you should keep pushing and bringing up such guests. Ki, every experience is a good experience because as life is okay. हम लोग का लाइफ भी एक एक्सपीरियंस है. You can consider your life also a podcast show where you have to answer a few questions, and then at the ending stage when you calculate the results you know what you have done. So make sure sorrow, anything, anger, expression, joy, betrayal, any kind of thing which you're experiencing is a golden experience and it should be elegantly experienced. ये तो मेरे को ये सीन अगर मैं पर्सनल हटा के बता रहा हूँ, शिवेन ये थोड़ा सा लग नहीं रहा कि ये मतलब कि नाम मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है लिटरली। तो संस्कार भाई शायद से हैं ये, आप नितिन आई गेस, शायद से मतलब गलत मत बोलना, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली नाम। इट्स ओके, इट्स ओके, हाँ। सो इट्स ओके. मतलब संस्कार तुम्हारी तरह है शिवेन, एक एक मतलब पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो बहुत जल्दी नहीं बोलेगा कभी। नो नो नो, सबकी अलग हाँ, अलग थॉट प्रोसेस होती है. मेरी बेइज्जती करो। एनीवेज, वर्स्ट एक्सपीरियंस अदर मतलब कि अदर देन पॉडकास्ट, ये मेरी बेइज्जती। बेस्ट एक्सपीरियंस अदर देन पॉडकास्ट। बेस्ट हो गया, वर्स्ट की बारी है। Best वर्स्ट क्या हो सकता है? नहीं, नो, best ही सेइंग की वर्स्ट, वर्स्ट वर्स्ट, ना। worst वर्स्ट अदर experience. देन पॉडकास्ट। मैंने पॉडकास्ट वाला हिस्सा ही हटा दिया क्योंकि आपने बोल दिया कि पॉडकास्ट भी अच्छा है, तो मैंने कहा पॉडकास्ट पहले हटा देते, पहले बोलिए वर्स्ट एक्सपीरियंस पॉडकास्ट के अलावा। नाइस, नाइस क्वेश्चन, नाइस। व्हाट आई से इज, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था ना किससे, वो वाला वर्स्ट नहीं बोल सकते, बट वो सिचुएशन ऐसा था जहाँ पे हम लोग का पेशेंस बहुत चेक हुआ। लाइक वी आर जस्ट गिविंग गिविंग, 5-6 एपिसोड हुए। लाइक मेरे दोस्त खुद मेरे को पूछे थे कि तू कर रहा है, व्यूज तो आ नहीं रहे तेरे, बट यू आर गोइंग। लाइक अभी ये जो पॉडकास्ट का ही पूरा प्रोसेस ले लो, एक पॉडकास्ट शूट करना, उसके बाद फिर उसको एडिट करना, अपलोड करना, इसमें पूरा आई गेस मेरे को लगता है 18 घंटे तो लग ही जाते हैं तुम्हारे, प्रॉपर। फिर भी तुम एनर्जी डाल रहे हो और कर रहे हो विदाउट इवन लाइक सामने से कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी कर रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो समवेयर वो बहुत टेस्टिंग पीरियड था। आई विल नॉट से वर्स्ट, बट बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे ऐसा भी था यार, क्यों हो रहा है, क्यों, लाइक एक पॉइंट ऐसा भी था जहाँ पे सब लोग आगे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मेरा क्या सीन हो रहा है, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मैंने किसी का गलत तो नहीं किया, वाई आई एम गोइंग, लाइक मैं ऐसा क्यों फेस कर रहा हूँ। बट सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, एक पॉइंट के बाद तुम लोग को बोलते हैं ना, भगवान देखता है, नहीं नहीं ये मेहनत कर रहा है, हो जाता है। Um, I have a lot of things to share, but I can't share because या that'll प्लीज get प्लीज दिशांका प्लीज का प्लीज अरे प्लीज शेयर प्लीज कर प्लीज. प्लीज, कौन ये कौन ओपन है, वी वांट टू ये yo, ओपन है. लिसन, ये वी वी that वांट टू वांट is टू no लिसन, लिसन। no. वी वांट टू लर्न See, फ्रॉम यू. see, प्लीज. see. I'll tell you something. Okay, दिस विल बी नाइस। I, या I can tell you things, but या you can. The thing is, it can land डाइजेस्ट you. नहीं हो गया, हाँ It, it, डाइजेस्ट नहीं it होगा। can land you. It can land into mental trauma, or cops might come at your place and take you away. नो, So नथिंग, if you इट्स if you, इट्स नॉट अ अगर प्रॉब्लम। आप मुझे बोल रहे हो कि
आपको बीटीएस मेंबर से डेथ थ्रेट आते हैं तो आप डर जाते हो तो नहीं, ऐसा कुछ अंडरस्टैंड. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बता रहा था कि डेथ रेट आए थे। So I'll सोबर share सोबर वाला one. बताए। हाँ। Okay, I'll share one experience where I started a business. Okay, and that was a decent business where I was trying to like have a wholesale business of metals, precious metals, and it was kind of like I was so I don't know what came into me. I was like, yes, let's get up and like let's sell precious metals. That was the inspiration which I got. I was like, chalo karte. I called five, six friends and I started informing each other like what's up, what's up. But in that process, I lost my consciousness and I lost a huge amount of money. So that was where I realized the entrepreneurship is something, entrepreneur spirit is something which should be taken very carefully. So after that was born Kissey, where I understood where your perspective lies and where your knowledge lies. So you can just go blind and do something which you are not doing. You can experiment. You can always experiment. There are good chances that you'll be successful. But ऐसा सीन होता है कि you can't just say something or be something without knowing it what it is because लाइक जहाँ कुएं तुम में कूद रहे हाँ हो तो सब सोच समझ के कुएं में कूदो कि कितना गहरा के डीप है कुआ, ऐसे ही कूद मत जाओ सीधा। बिकॉज तुम्हें पता नहीं कुएं में कौन सी मछली है तुम्हें कब खा जाएगी तुम्हें कब निकल जाएगी पता कुएं नहीं में। चलेगा सो हाँ या कुएं में या खाई में या कुछ भी बोलो यू डोंट नो व्हाट एनिमल्स आर देयर बिकॉज what you're starting right now has been started by someone else. Not that always you're gonna do a revolution. You might, you might, but वहां पे कोई ना कोई खिलाड़ी है तुम लोग से बड़ा महारथी अतिरथी और रथसारथी है वहां पे तो तुम लोग को पटक सकता है कभी भी तुम अभी भी चूहे हो ऐसा होता है वो तो basically know your things that you're doing study test the fields and enter तो उसकी वजह से क्या होता है मतलब there won't be any worst experiences as such uh, and I think so that is it that is the only thing which I can share I don't want to share because it lies in my personal boundaries and space हाँ, and I कोई ना, know that yeah. कोई ओके। ना। एक बार मैं क्या कहता हूँ ऑडियंस का भी कर लूँ तो एबीसी ट्रेस, शाश्वत, मंजीत और ये आरोही, और ये कौन है अगला, और पता नहीं ये नेहा सिंह करके जो भी है। हाय हेलो गाइस। हाय हाय गाइस। Hey guys what's up हाय गाइस। सर मेरे कान हैं सेंसिटिव है बड़े, दब जाएंगे सर। सो मंजीत का क्वेश्चन है, ब्रो पॉड, अच्छा, वो पूछ मंजीत से पूछ, मंजीत पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं पॉडकास्टिंग का मतलब कि तरीके क्या हैं। podcasting के तरीके as in what kind of तरीके does he want we can tell him everything लाइक आई गेस मतलब कि प्रोसीजर पूछ रहे हैं। प्रोसीजर okay या स्टाइल, लाइक सी आई विल टेल यू द स्टाइल, दिशांक विल से द प्रोसीजर। स्टाइल में इंटरव्यू बेस्ड पॉडकास्ट होता है, फिर कॉन्वर्जेशन बेस्ड पॉडकास्ट होता है, फिक्शनल पॉडकास्ट होता है, नॉन फिक्शनल होता है। फिक्शनल मतलब जहाँ पे आप लाइक ऐसी बात करने लग जाते हो रैंडम टॉपिक्स पे विच आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट विप्ट नहीं होता है। वेरेस नॉन फिक्शनल वो होता है जहाँ पे तुम लोग स्टोरी वोरी बनाते हो, साउंड इफेक्ट डालते हो पॉडकास्ट में, जैसी वो कहानियां नहीं होती है ऑडियो बुक्स वाली, जहाँ पे लोग बच्चों को स्टोरी वगैरह सुनाते हैं, या फिर वो हॉरर स्टोरीज आते थे कभी स्पॉटिफाई पे, उसमें साउंड इफेक्ट्स वगैरह होता है, स्क्रिप्टिंग होता है पूरा। सो वो नॉन फिक्शनल में आता है। तो डॉक्यूमेंट्री ऐसे किस में आ चार, सकती है? नो डॉक्यूमेंट्री इज नॉट पॉडकास्ट आई बस थिंक। आई एम आस्किंग अबाउट बाय। नहीं, documentary genre is there in the podcast but it's ओके more like you can say a news telecast or like something which is addressed in a way of documentation. Okay, ओके so there is the you see books and audiobooks and podcasts. These are like the things which go hand in hand. If you have a genre in a book, there can be a genre in a podcast and audiobook. So it will go hand in hand. जी मैं यही बोल रहा हूँ, कहाँ गई ये बोलो। And हाँ। I needed process, right? Process is basically you need to shoot some podcast. I think so 5 to 10 episodes should be pre-recorded. Then you should
you should know that where you want to post it, कहाँ post करना है आपको. You can post it on a hosting platform, which is Spotify for podcasters. And there are other platforms also, which is Podbean. There is, I think so, Buzzsprout and others are there which charge you. But I think so, Spotify for podcasters is good because it is free and you can post it multiply. एक लिंक डाल दिया, RSS लिंक कॉपी कर दिया, और बाकी साइट से तुम लोग का अकाउंट बना के तुम लोग RSS लिंक कॉपी करते हो, तो एक जगह से बाकी के नेटवर्क्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. And if you want an audio base, then you just need is a phone. Minimum need is a phone or any recording device. You can have a recorder, digital recorder. You can record with it, and then you can convert that data into audio and edit it. If you want a video based thing, then what you can do is you need some cameras, you need some good lighting, and you need dynamics for it. Because dynamicism के बिना, I think so, the podcast is not like entertaining. अगर तुम लोग कुछ दिखाना चाहते हो, so it is better that you make sure that everything is properly seen, arranged, like staged, and the lighting is proper, the depth is proper, the facial features are coming properly, expressions are proper, people are connecting in proper way. So there are a lot of you can keep on starting and keep on continuing because new things evolve, new things emerge, new things become popular, then you adapt that. Now the AI technology is increasing day by day. What do you know? There is a AI camera in future because AI is already coming in cameras and phones. So you just need to have that and learn that. So there are processes which you need to learn. It's just like getting education and learning something which is different and more informative. Keeping that in head, you should know what are the things which are coming in market and establish that with yourself. So I think so that's the great process too. Process of learning is the greatest process that is for every podcaster out there. ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन है आप दोनों से। रील्स से आप लोग फेमस हुए, राइट? हाँ, you तो can Yeah, say. ओके, तो kind of. अगर आपको उसके बारे में कुछ राय देना चाहेंगे तो आप क्या दोगे? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। या अच्छा, और नेगेटिव रील्स ज्यादा का होना सीन. चाहिए। नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव कम। नहीं नहीं, ऐसा नेगेटिव कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। नहीं नहीं, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है. लाइक सी, पहला चीज जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हो रहा है, लोगों को एडीएचडी का प्रॉब्लम होता है अभी. लाइक Hey, यू कांट, you can say that. You can say that. लाइक You can. अटेंशन, लाइक चल हम लोग इसको और फिल्टर्ड करते हैं. यू हैव लाइक अटेंशन स्पैन तुम लोग का बहुत कम हो गया अभी. यू कांट फोकस ऑन थिंग्स लाइक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस तुम लोग नहीं देख सकते अभी 10-15 मिनट वाले, क्योंकि रील्स में तुम लोग का ऐसा हो गया 15 सेकंड में कुछ नया दिख रहा है, डोपामाइन किक हो रहा है कि अरे कुछ तो नया मिल रहा है मुझे, तो यू कांट फोकस ऑन थिंग्स. वो पहला पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट है रील्स का. दूसरा रील्स का ये है कि वो कंटेंट बस फेंकता है तुम लोग के ऊपर, मुंह पे ये देखो, अच्छा ये अभी खाने का देखो, ये अभी आईफोन का देखो, ये अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का देखो. तो ऐसे बस फेंकता जाता है. लाइक प्रॉपर ऑडियंस समझता नहीं हो तुम लोग को कि अच्छा इसको अभी वैभव को ये अच्छा चीज लगता है तो अभी मैं इसको ये सजेस्ट करूंगा, वो होता ही नहीं. ये जस्ट लाइक रैंडमली वीडियो पोस्ट करे भेजता रहता है तुम लोग को रील्स में. Yeah. So in that case, yes, ADHD can happen. ADHD is something known as attention disorder, attention deficiency disorder. So क्या होता है वो, मैं now there is something which is known as cocomelon. अगर आपने नाम सुना है, आपको बहुत पता है अच्छे से। cocomelon. मैं बहुत अभी अच्छा। वो रील देखा मालूम, कोको मेलन वाला वो. हाँ, so what happens is Cocomelon has every 5 to 7 सेकंड में कट रहता है, every 5 to 7 सेकंड में चेंज रहता है. So what parents think is parents are feeding their kids with rhythms and nursery rhymes, but what is happening is they're getting hooked to the spike which they are getting, dopamine spike. So short form content, अगर तुम्हें see, it's like a drug only itself.
whatever spikes your hormones in any way, or spikes or miles your hormones, is a drug. TV, light, screen, everything is a drug, and you can get addicted to anything. सो Like यू आर सेइंग again, दैट मतलब कि addiction. रील्स देखना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं नहीं सुन नहीं मेरी नहीं, बात, उसने आई एम उसने आस्किंग। ऐसा नहीं बोला, उसने लिमिट, नहीं उसने नहीं खाली नहीं लिमिटेशन नहीं. बताया है। Did I say that? शिवेन, शिवेन, You एक सेकंड, एक सेकंड, पहली बात शिवेन, हम गेस्ट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, हम गेस्ट पर नहीं तू है, जो ऐसा गेस्ट। क्वेश्चन मत पूछ भाई, अरे भाई गेस्ट हो कि ना हो, तू ऐसा मत पूछ, रील देखना चाहिए ऐसा नहीं होता, वो खाली लिमिटेशन बता रहे हैं। अरे यार। I said कि नेगेटिव क्या now चीज है, नेगेटिव इफेक्ट्स you क्या है? what did you ask me, right? You यस। या asked me you need negatives, right? या Now या। when I'm giving you negatives, why are you going back on your word? लाइक हाँ, ही अरे। जस्ट समराइजिंग कि ऐसा ऐसा सी, हाँ। यहाँ से एक क्वालिटी मालूम पड़ती है इसकी This वैभव is की, विच इज की this ही is डज risky ही इज नॉट, business. ही इज नॉट प्रॉपर एट लिसनिंग थिंग्स, वो ये अपना शिवेन है बट ही इज नॉट प्रॉपर लिसनर। बिल्कुल। Exactly. You should be calm and composed while you're having guests. आई लाइक यू I, शिवेन, शिवेन सही है बंदा, लाइक। थैंक यू। हाँ, मैं स्ट्रीम छोड़ूंगा। वैभव इसके साथ रहो, नहीं तो फिर तुम लोग मैं स्ट्रीम छोड़ यू रहा माइट हूँ। गेट इनटू ओ नो। कंट्रोवर्सी। मैं स्ट्रीम छोड़ रहा because हूँ। what happened is right now I am telling you something and you said something else, which are never which are ऐस never composed in words, right? या My thing is I'm saying it because I know I have things. My attention span is also low, which has raised up because I have started practicing on long format content work. So लाइक। continuing that, if you are into industry business, you should know it's like being a drug dealer itself. तुम लोग को Okay, इसके प्रो और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए, लाइक। हाँ, because you कंटिन्यू। need to know how to sell your product, how to make someone addicted to your product, how to help someone with your product. Because a medicine can fuck your life, a medicine can destroy your entire career, a medicine can help your health get better, and a medicine can do things which are not expected. Because everything in this world has side effects. With effects comes side effects. Anything, just like your attention, Vaibhav. ओके। मेंटल पीस। ओके। ये क्या लिखा है? ये कोई जोक मेरे को कोई समझाए। सबकी जीएफ को लाइव में बुला के दिखाओ भाई। ये मेरे को कोई समझा सकता है ये लाइन की क्यों लिखा ये गया? वो मजे मजे ले रहा है वो, जस्ट लाइक मेकिंग अस लाफ। या रैंडम है, लाइक शी जस्ट मेकिंग ओके। फन, What's going on? ट्राइंग टू बी फन। या ड्रीम कोलैब। But पुनीत सुपरस्टार। he has Punit superstar, but my dream collab is something which is very different, and I mostly want to be with Joe Rogan. I think so. हाँ, That is very inspirational because I'll be representing India in a different इंडिया। way on the podcast scene. And if you see, right, that's international for me. And even Logan Paul, I can say because this all big podcasters. I just want them in a room with me and talk. डिस्कसिंग टॉपिक्स लाइक। हाँ। So there is a list. You can say there is a list, and हम्म। it's not a list. It's not a dream. It's a goal, and I'll have them one day. I'm gonna. I am gonna have them. I'm sorry, but See, this is a dream is manifest. something like you just imagine, but goal is Yeah. something like you work on and achieve it. एंड्रयू टेट को भी आएगा मैं पॉडकास्ट पे एंड्रयू टेट को भी बिठाने वाला है मैं हाँ वही हाँ, मैं वो क्या है। कहते, वही मैं पूछने वाला था कि एंडिटेट भी होना चाहिए। because Andrew Tate is someone he's a person he's a nice person as a human he's nice but sometimes when he speaks he plays a character and gets delusional. So I want to tell him that you are kind of delusional on the speech and terms which you're doing, but you're a great human being. Do what you're doing as such because he's helping men out there to come out of depression and things, and that's an inspiration for many to be able to recognize themselves. One more dream collab, goal collab, we can say, is someone from YouTube industry that will be, I think, David Dobrik for some reason, because that guy
has taught me that even if you have pulling issues over you, you just have to be smiling and keeping others blessed. Mr. Beast won't be one because he's overrated right now. I feel he's just doing what he has to do and he has done what he's done. But that's it. There are many which, if I keep talking, it will take an hour or two. But yeah, these are some top tier people I watch, which I want. Hi, Swaroop, by the way. Swaroop is watching. Swaroop, आई गेस सो, पता नहीं। yeah, Swaroop is watching. इंडिया से मतलब कि इंडिया से कोई मतलब कि एक स्वरूप, ओके, और कोई इंडिया से? नहीं नहीं नहीं, स्वरूप इज ही सेइंग कि लाइव सेशन में आया है। ओ मतलब कि ये बताइए, So, इंडिया से कोई है कोई? nah, no Indians, bro. Indians are. There are Indians, but most of there is Acharya. I think so. I want him. Then there are people which is ध्रुव they're राठी? not there on inter. Huh? ध्रुव राठी? नहीं नहीं Who, नो, Dhruv ध्रुव Rathi. राठी ही मेक्स इंफॉर्मेटिव बेस्ड वीडियोस, है मालूम है। Who is he? ध्रुव राठी, यू डोंट नो? No, I don't. I don't keep. I रन don't keep such ओके, names. रणवीर अलाबालिया, बियर नहीं नहीं, बाइसेप्स? वो तो No. पर्सोना प्ले करते हैं हमारे रणवीर सर। ओ, सी वी लाइक हिम एज अ पर्सन, लाइक बहुत सारी सीखने जैसी चीजें हैं, बट लाइक इफ यू लुक अप टू हिम एज पॉडकास्ट वाला गाय, देन नो, लाइक ही इज प्लेइंग पर्सोना, लाइक वो तुम्हें ऐसा दिखा रहा है जो वो नहीं है रियल लाइफ ओ, तो मतलब इसमें डिफरेंस बता सकते हैं अगर If बत, में। लाइक yeah, yeah. प्लेइंग, हाँ लाइक मैं Playing persona and playing being real is different now. What happens is when we turn on camera, we get overexcited or we start speaking things which we are not, or we try to be something which we are not. We try to be the good guy because every story has a victim. If you're telling a story, you're always a hero and a victim or a victim. So that's what is going on here with him. He's a hero in his story. So he's not as you see, but he's a good guy. As a businessman, I respect him. As a content creator, I might not respect him because he was making videos which were on fashion, and now he's making videos which are completely different. Okay, so sustain is doing good, but it's not the inspiration for. I think so. It shouldn't be inspiration for people. Just Bhuvan, yeah, Bhuvan, yes, because that is a guy I like to talk off camera and be friends with, and I'll do so because he has seen things which no one should. His parents got off when he got on the peak pinnacle success. Like that's the biggest loss you can say for any content creator or any influencer or any human being. It should not happen. एक ही टाइम पे दोनों माँ बाबा दोनों जाना हाँ, is कोविड में। not, it's not easy. It's the biggest trauma. It avoids talking. He has that year inside his heart and he has that holding. So yeah, I want to talk to him and be friends with. In शिव, India, हाँ हाँ, more कंटिन्यू। more content creation. I अजून कोण आहे रे? इंडिया में, आई नॉट से इंडिया, लाइक इफ यू गो इन आवर नेबर कंट्रीज, इरफान जुनेजो है समथिंग, लाइक आई लाइक बी हैप्पी टू टॉक टू हिम। देखते हो आप में से कोई इरफान जुनेजो को? पहली बार सुन रहा हूँ। नो नो, नो वॉच ऑफेंस। वॉच हिम। नो नो। It's okay, fine. नहीं, इट्स See, ओके, फाइन। content creators are something which it's not like you're a celebrity. Okay, you're a celebrity, but you're not known to everyone. Those who know you, you're celebrity for them. Those who don't know you, it's just like normal thing. It's just like normal human being making videos on the internet. सी एंड मैं आई से कि हम लोग इंडिया में क्या करते हैं ना, जिसके भी फॉलोअर्स हो गए, 10 के हो गए, 20 के हो गए, लाइक किड्स लाइक अस, जो 15 16 17 18 साल के होते, दे स्टार्ट टू लुक अप टू देम, लाइक कि अरे ये तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ही जस्ट हैविंग फॉलोअर्स 10 के 20 के, बट मेंटली वो कुछ नहीं है, इज नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग। एंड लाइक तुम लोग उसको ऐसे प्रेफर करते हो कि अरे मैं तो भगवान, मैं भगवान, बी लाइक यू, लाइक वैभव जो कर रहा था कि नहीं यार आप आ जाओ, आप आ जाओ, लाइक समवेयर इट इज, ऐसे नहीं बोलूंगा कि लाइक ये गलत है, बट समवेयर आई विल से कि ट्राई टू परसीव पीपल एज कि हाँ ये कंटेंट क्रिएटर है, ये वीडियोस पॉडकास्ट बनाते हैं, हिल कम बेनिफिट हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि
नहीं ये दोनों आ जाएंगे तो लाइक मेरा जीवन सफल हो गया, समथिंग लाइक दैट। इससे क्या होता है मालूम है, लाइक नाउ हम लोग को सेल्फ अवेयरनेस है कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है। बस अभी अभी 2 महीने पहले ही फॉलोअर्स गेन हुए, उसके पहले व्हाट वी आर, ऐसे ही नॉर्मली हम लोग घूमते थे। अभी भी वैसे ही करते हैं। अभी लाइक इफ यू कम इन मुंबई, हम लोग ऐसे ही पागलों की तरह घूमते हैं यहाँ पे। शूट खत्म हुआ, जस्ट वील गेट लाइक, हम लोग दादर में रहते हैं पर बस शूट दादर में होता है, सो वील लाइक कि ऐसे राउंड मार रहे हैं, लाइक जस्ट हैंगिंग आउट। तो इफ यू हैव दिस सेल्फ अवेयरनेस ना, अभी सामने वाले बंदे को सेल्फ अवेयरनेस है, वो ग्राउंडेड है, तो उसको मालूम है कि हाँ हाँ ठीक है ये बोल रहा है बट ही जस्ट बीइंग एक्साइटेड। नहीं तो क्या होता है पता है, इफ यू स्टार्ट टू परसीव देम कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा तोड़ो इंसान है, लाइक ही इज गॉड लाइक, तो उसको गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एंड देन ही विल ट्रीट यू लाइक तू कोई तो ये है, लाइक गुलाम कैसे होता है छोटी जाति वाला और समथिंग, लाइक कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस हाँ मेरा फॉलोअर है, इसको अभी मैं ये बोलूंगा ये कर देगा, लाइक तुम्हारा वैल्यू कुछ नहीं रहता है फिर उस सामने वाले बंदे के इसमें। लाइक अभी हाउ पीपल इंडिया के लोग जैसे एक्टर्स को ट्रीट करते हैं कि अरे अरे नहीं सेल्फी चाहिए सेल्फी चाहिए, लाइक कि भगवान थोड़ी है वो, ठीक है ब्रो, लाइक ये सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी भी नहीं बोलूंगा, जस्ट एन एक्टर विद गुड फिल्म्स। और भगवान ने भी इतना कभी किया नहीं रहेगा, कौन से भी भगवान ने, भगवान की अगर तुम लोग भक्ति करते हो भगवान भी तुम्हें दर्शन देते हैं। तो ये तो इंसान है और वो भी उसके पास कुछ खास नहीं है, वो सिर्फ नकल उतार रहा है किसी की। तो ये सोच के चलो कि भाई वो भी तो वो ही है, पैसा आने से और फेम आने से इतना, ये फेम इज जस्ट ये एन, हाँ हाँ, फेम ये इज जस्ट एन अवेयरनेस इल्यूजन। रखो, लाइक ये अवेयरनेस रखो कि सामने वाला भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी भगवान बसता है, उसके अंदर भी भगवान बसता है, वी आर ऑल सेम, हम लोग एक ही है। शिवेन सवाल पूछ सकते मैं इन लोग से क्या सवाल पूछूं, इन लोग ने मेरे सभी मतलब क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हैं। मेरा भी क्या कहते हैं, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ पैकअप करें, लेकिन क्या कहते हैं अभी भी अम, बचे कुचे हैं थोड़े बहुत इंस्टा में, क्योंकि इंस्टा पे मैंने और डाला था बहुत तो आपने सही बात बताया कि हमारे सबके अंदर गॉड बसता है। पैसा हम्म, कमाने से ये नहीं कि हम गॉड से ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यही मानता हूँ। नाइस। नाइस ये नाइस। बात है। मतलब कि मैं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया हूँ इन लोगों से, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया चीज़ों की। नाइस नाइस, तो दिस इज व्हाट ना किससे इज, अभी पॉडकास्ट पे भी दोनों आंखें बैठोगे, हम लोग वही बात करने वाले हैं, तुम लोग को खोल देंगे लाइक। अब आप चांस दीजिएगा तो देखा जाएगा। श्योर श्योर, आप मुंबई आओगे तो बताना, लाइक वी लव टू हैव यू। वो मैं तो मुंबई, पुणे में ही रहता वो हूँ। पुणे में रहता है एक्चुअली, शिवेन ओके पुणे। सो यू गाइस आर इंटरनेट फ्रेंड्स और नो नो नो, आप पुणे। नो नो स्कूल नो, फ्रेंड्स हैं हम स्कूल लोग। फ्रेंड्स। हम अच्छा लोग तो आप भी स्कूल पुणे में फ्रेंड्स है। रहते हो दोनों, नहीं नहीं, मैं सिर्फ रहता हूँ, ये लखनऊ में रहता है। एक्चुअली तो लाइक दोस्त कैसे हो आप, स्कूल फ्रेंड्स पुराने स्कूल कैसे हो, से, क्या समझा पुराने नहीं मेरे स्कूल को। से। बहुत पुराने स्कूल से है। आई थिंक हमारी ओके, दोस्ती को अभी आज खत्म हो रहे हैं 4 साल, लिटरली आज का दिन है। नाइस नाइस नाइस। मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे दोस्त है भैया, दोनों। भैया आराम से आराम से। खाना आप खाना खा टल रहे हो, खाना टल आप जाएगा। सड़क ना जाए इसलिए। It's okay, because एक internal joke है, या you're from Lucknow and you're from Pune, so like that's the greatest. ओ माय गॉड। अरे यार भाई। वो अभी 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 क्लिक हुआ मेरे को, जोक हम लोग का इंटरनल जोक है। तो लाइक तुम दोनों का मीटिंग पॉइंट मिले कब तुम दोनों एक दूसरे से। हम लोग गया में मिले थे, अरे डीपीएस दिल्ली यार पब्लिक बस, स्कूल में। ओके। पूरा डिटेल हाँ, बता दे। एक्चुअली हम लोगों का पुराना स्कूल डीपीएस था, बिहार में, तो हम लोग ऐसा क्लासमेट्स थे बिहार उस में। टाइम। हाँ, या कुछ अच्छा, रीजन बस वो ड्रॉप आउट है, मतलब कि एक क्लास ड्रॉप किया है किसी रीजन बस। तो अभी लाइक पुणे में आप ऐसा लाइक स्कूल कहाँ पे अभी फिर आप। आप आदित्य इंग्लिश मीडियम, घर अच्छा, से 6 किलोमीटर दूर है। तो मतलब आप दोनों का भी कांटेक्ट कैसे, ऐसे ही इंस्टाग्राम या लाइक सोशल ना ना मीडिया ना, से होता है। व्हाट्सएप व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सअप व्हाट्सएप। नंबर, नंबर। ओके बट स्टिल लाइक सही है यार, ये यहाँ पे रहता है वो वहाँ पे रहता है, बट स्टिल यू गाइस आर लाइक कनेक्टेड, नाइस। ये एक्चुअली इसने क्या है मेरी ना। बहुत इसने मेरी बहुत हेल्प की है, सच बताऊं, बहुत 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 हेल्प की है। अरे सॉरी। ये बात Sanskar, है। नाइस। the people who have ADHD is just not them, because out of sight, out of class is just our perspective.
और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था कहीं भी जाएंगे ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती वाला। अरे अरे, सही 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 यार। क्योंकि ये एलेक्सा, ये प्ले ये दोस्ती। ये हाँ। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वेट, I'll play ओके, it, wait। ओके या गूगल, ओके। हम लोग डीजे बजाओ। वो बजा। तेरे पास wait, गूगल है? हाँ गूगल तूने असिस्ट पीछे बताया नहीं। रखा हूँ। Playing albums is only okay, available to Spotify Premium subscribers. अरे But यार, give this Spotify Chora DJ Baja ओके station wait, I'll वो मेरी बेइज्जती करने लगा अब। मेरा गूगल पे। एनीवेज, अब आते हैं थोड़े इंस्टाग्राम के मैसेजेस पर कि जो मेरे को आए हैं आपके लिए। सबसे पहले, oh nice। ओके गूगल, है गूगल, सुन भी नहीं रहा। वाह। सही अब सही। सुन भी नहीं अरे रहा। ये तो भोजपुरी गाना बज गया। नाइस मेरा नाइस ही, नाइस। अरे यार, ओके, अरे ओके, ओके। पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए, बाय सयन, मतलब कि पिछला पॉडकास्ट में वो भी पॉडकास्ट ही करता है, तो उसका सवाल आप लोगों से, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू किस्ड? क्या क्या? How मेनी many? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू किस्ड? टाइम? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू किस्ड? भाई ये किस बहुत ये किस? अरे ये अरे बहुत किस किस? बेफालतू क्वेश्चन है, मत पूछ बहुत प्लीज। फालतू। आई रे। फेवरेट यूट्यूबर, अरे, फेवरेट यूट्यूबर। हम लोग ने बोला ना, अभी अभी बोला ना, हाँ वो रिपीट हो द गया। पीपल यू वांट टू कोलैब विद। अच्छा ये बताइए, ये आपके किसी सब्सक्राइबर लाइव गेमर करके है, उसने बोला है, व्हाट डू यू इसका थिंक? इंटरनेट, हाँ, आवाज आ रही है? सॉरी मैंने नहीं, फास्ट से लाइक कट हो गया सब। ओके, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे को कनेक्शन ढीला हो गया। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेल डोमिनेंस बाय लाइव गेमर? मेल डोमिनेंस, मेल Nice डोमिनेंस, question. नाइस Male क्वेश्चन। dominance. Uh, See, dominance as such. Okay, so I keep saying these things. Dominance is as such. Male is a dominant perspective. Male are naturally dominant. Okay, males need to be naturally dominant because that's how we are built up. I'm not saying कि females shouldn't be, but males are naturally dominant, and dominance and violence इसमें बहुत फर्क है. Dominance is someone who leads you in proper terms and takes you in action और तुम्हारा सब कुछ खोल चाल के तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे, उसको डोमिनेंस बोलते हैं. एंड वॉयलेंस इज समथिंग जो तुम्हें जबरदस्ती करे, तुम पे जोर डाले एंड तुम्हें प्रॉब्लम में डाले. अजी, अजी, खिड़की का बंद के लिए हम लाइट वाइट जो हाँ ठीक है. So violence is something which is forced on you, and dominance is something which can help you grow. So that's the difference in dominance and violence. तो ये एक चीज याद रखो. Whenever you're growing up as a kid, whenever you're entering 20s, if a girl is saying no, which is no as a consent, so back off. हम्म नो का मतलब ऐसा नहीं रहता कि मुझे मनाओ या फिर ये करो. वो कितना भी बोले कि मैंने नहीं बोला था, देन शी एक्ट्स लाइक ओके, आई थिंक दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड, मेरे को मनाना चाहिए था. तो उसको बोलने का, सुन तू नहीं बोली ना, नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं कि आगे मेरे को समझ में नहीं आता है. हम्म दैट्स योर वैल्यू एज अ मैन. That's your thing as a person. You should dominate in a good way to lead people, not to violate them. हम्म वॉयलेंस कब प्रॉब्लम होता है बोलो मैम, तुम लोग किसी का एडवांटेज लेने का शुरू करते हो, तो वो डोमिनेंस और वॉयलेंस में फर्क नहीं समझते. लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वॉयलेंट लोग हो जाते हैं और उसको डोमिनेंस का नाम दे देते हैं. तो कीप योर पर्सपेक्टिव्स क्लियर. मेल डोमिनेंस इज नेसेसरी in space like work, in space like creation, in space like leading, in space like politics. Male हम्म dominance, nahi, any kind of dominance where you can dominate that space and create your own value, not fear. Okay, there is a huge difference between fear and, again, fear and dominance. तुम लोग का जब वैल्यू क्रिएट होता है तो तुम लोग का एक वैल्यू सेट होता है, और वो वैल्यू एक डोमिनेटिंग पॉइंट बन जाता है कि you, for best example, if you make a 20 floor building,
in your Lucknow. ओके, लखनऊ में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, मुझे पता है, बट अगर कोई इतना बड़ा बिल्डिंग बना दे, 50 फ्लोर का बिल्डिंग बना दे, तो वो क्या बनेगा, एक दर्जा बनेगा कि हाँ बाबा, ये बिल्डर हम्म ने 50 माले का बिल्डिंग बांध दिया, लखनऊ में ऐसा कोई नहीं है। तो वो डोमिनेंस हुआ कि वो अलग सेट बैक कर रहा है, वो अलग चल रहा है, उसका डोमिनेटिंग स्टाइल अलग है, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है, उसका वैल्यू जनरेशन स्टाइल अलग है, तो वो अलग हो गया। So that is the difference between dominance and setting a, like male dominance is not something, you can say, it's not just gender based. Anyone can be dominant. Okay, any gender can be dominant, but male dominance is something which is given by God. And sometimes when you see a submissive man, for me that's weakness. For me, I can't take a submissive man because I slap the fuck out of him and say, "Get up. That's not your responsibility." It might sound wrong, but if if you're not the person to lead your house, then what are you, my man? Why are you born as a man? It's not just your responsibility, but it's also your, आ रहा you हूँ, can हाँ say, हाँ। it's also something थोड़ा which काम कर, is थोड़ा काम important कर। for you to keep and generate that family. Because तुमसे आगे की पुश्तें चलने वाली है। अगर और तुम ही नहीं रहोगे तो तुम फिर क्या हो? तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू ही क्या है? तुम्हारा फिर दर्जा ही क्या है? अगर लड़कियां लेज अगर इसमें से फेमिनिस्ट और लड़कियां लेज़बियन लड़के आके बोले कि नहीं ये गलत है, देन यू जस्ट टेल देम, दीदी शांत रहो, बिकॉज तुम कल जाके किसी आईवीएफ सेंटर से एक स्पर्म स्पर्म डोनर से स्पर्म लेने वाले हो, और वो भी एक मर्द ही है। दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अ बेबी। इट्स नॉट लाइक समथिंग रॉन्ग। So male dominance should be in a correct place to lead people out of problem, poverty, trouble, and all the bad things which are there, and not just create problems. Okay, that's male dominance. नाइस। सेम आंसर। हाँ लाइक क्या गुरु ही जी बोल बोले। दिए। एक्सप्लेन दे। दो क्वेश्चन एक साथ। फेवरेट मतलब कि यू वॉच एनिमे, दोनों दोनों से है तो आप दोनों एनिमे देखते हो, और दूसरा क्वेश्चन है कि बिगेस्ट फियर। ओके, मैं बोलता हूँ एनीमे का, हिल देन कंटिन्यू। एनीमे आई डोंट वॉच एनीमे, लाइक आई नो, लाइक सी एडवांटेज क्या क्या एनीमे के। फर्स्ट चीज कि तुम लोग को पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मालूम हो जाता है लाइफ के बारे में, तुम लोग का पर्सपेक्टिव चेंज होता है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लाइफ एनीमे से। आई डोंट वॉच इट बिकॉज बहुत काम रहता है अभी, एंड लाइक एनीमे के एपिसोड ही बहुत ज्यादा बहुत रहते ज्यादा हैं। रहते हैं। हाँ, सो उसके वजह से मेरे को मिलता नहीं है देखने, बट या थम्स अप फॉर एनीमे। ये एनिमे लवर है, he will tell you अरे तो सर more. बताइए, हमको भी जानना है क्या देखते This हैं। Dishang Timle. My anime taste is a little wider. So my favorite ones are, I can say, right now I'm seeing watching Demon Slayer, हाँ which ओके। is going on because the new episodes are going on. Then Attack of Titans is there. Then I love Cowboy Bebop. Then I Akira मेरे को पसंद है. Then Kishimoto का मैं बड़ा fan है because Kishimoto's artwork is the greatest artwork of all time. Um, I relate to Kishimoto because all the love stories which he creates is like great. Then Kimi no Na, then uh, then uh, there are five, four. Naruto. Naruto is also something which is nice, but बट द सेकेंड सीरीज ऑफ नारुतो दैट इज बोरुटो इज, आई गेस, बात नहीं करनी चाहिए उस पर। it's okay. It's not हाँ ओके, bad, but just ओके कह सकते हैं। what's happening is right now when he's writing the story, हम्म you guys don't know what's the end because the writer of the Naruto is जो author है, हम्म। he's very smart and intelligent. He is a legend by himself. So when he's making all these funny things, he's just making it to make the unwanted attention go away. वो By the end of the season, when he'll try to end it, it's gonna be like Naruto's death is gonna happen. Sasuke's death is gonna या happen. इट्स इन द मांगा, इट्स इन द Yeah, मांगा। Naruto's death. Now Kurama is dead. So there are things which are good. There are things which are bad. So
there are things which are happening in a balanced manner. I think so. So चलो yeah, चलो दुनिया में कोई तो मिला कि क्या कहते हैं एनिमे के लिए बात कर सके. it's nice. No, No, there are anime guys are fans. दे आर what इनफ what फैंस There, बट कोई बात नहीं करते इतनी जल्दी ना क्योंकि why? then you are in the wrong place, man. You need to आई discover हैव things. नो वन टू स्पीक ना दैट्स व्हाई जिससे बात करता हूँ वो उसको पता ही नहीं है सब क्या है. You Hmm. join communities for that reason. You join Reddit community, you join Discord Discord. community. Yeah. If you want to discover, you join Facebook communities. You join communities for a reason. Now, as we know, there are LGBT communities also, but because they need support. So there are communities which seek, and there are communities which you can learn from. Now, community building is also a skill, and community preserving is also skill. So तुम्हें कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है एंड देन यू कैन मेक फ्रेंड्स और यू कैन जस्ट मेक एक्विटेंस वेयर यू कैन लर्न अबाउट एनिम एंड research about it. You can, it's, don't fear about having someone, okay? Make international friends also. Japanese people are very polite people. They can talk to you. They are nice in tone, and you can talk to people from US, Germany, and etc. etc. Just don't limit yourself in Hmm. this way. ओके सो मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और थोड़ा लंबा नहीं खींच सकता. खींचे बोलो खींच दें. नहीं भैया सबको काम करने हैं. सो दैट इज फॉर टुडे गाइस. We are 56 minutes. हाँ 56 मिनट्स. तो आखिरी में आप लोगों को कुछ बोलना है ऑडियंस को जो फ्यूचर पॉडकास्टर मतलब कि पॉडकास्ट करेंगे जो इस जॉनरा में Hmm. आना चाहते हैं और कर रहे हैं Hmm. करना चाहते हैं तो ऑल द बेस्ट टू देम. लाइक करो जो करना है, बट लाइक डोंट सीक इट एज कि एंड पॉइंट को मत रखो दिमाग में कि नहीं नहीं मेरे को फॉलोअर्स आएंगे नंबर्स आएंगे. तो फिर तुम लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे, लाइक ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे. एक दो साल में बंद हो जाओगे जब तुम्हारा एनर्जी चला जाएगा कि अरे यार इसमें से कुछ आ नहीं रहा है मेरे को. आई जस्ट स्विच इट ऑफ. प्रोसेस में मजा लो जैसे हम लोग ने अभी And बताई. हाँ. इफ enjoy यू the वॉच. process, make your artwork at, देखो कौन सा भी काम है ना आर्ट वर्क की तरह लो, कला बनाना और कला प्रेजेंट करना ये सीखो. बाकी ऑटोमेटिकली अगर कला के मतलब प्रेमी इकट्ठा हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी बन जाता है. हाँ. लाइक किसी से सपोर्ट मत मांगो कि यार मेरे को दे दो शाउट आउट दे दो. ये वो कल्चर अभी बोलते हैं ना, लाइक लेट इट बी. खुद को सेल्फ अवेयर रहो कि मेरा आर्ट इतना अच्छा है कि मेरे को उसके लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कुछ. मेरा आर्ट खुद से अपने आप ये हो जाएगा. लाइक क्या तो बोलते हैं, लोगों तक पहुंच बेस्ट. जाएगा. अभी किस्से का भी हम लोग क्या किसी से प्रमोशन मांगने नहीं गए थे. लाइक कि नहीं वी डू पॉडकास्ट, ऐसा ऐसा होता है, विल यू लाइक टू ज्वाइन इन. बस इतना ही था. पीपल केम, उन्होंने किया एंड उसके बाद फिर लाइक अपने आप ही वो ब्लो अप हुआ. हम लोग को कुछ ज्यादा ऐसा कोई ट्रिक विक नहीं यूज किया हम लोग ने कि इसकी ये ट्रिक यूज की एंड रील्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए and हम लोग ये हुआ. नो, जस्ट कीप डूइंग इट एंड लाइक ऑल द बेस्ट. और एक जॉनरा पे सिलेक्ट मत हो, बेस्ड मत हो जाओ. व्हाट आई सी राइट नाउ इज लाइक एक कुछ चल जाता है तो उसको ही पकड़ के बैठ जाते हैं. लाइक रिलेशनशिप हो गया या और कोई टॉपिक हो गया तो उसको ही लेके उसका लाइक ऐसे निचोड़ देते कि अरे नहीं अभी मैं इस पे ऊपर ही पूरा बनाऊंगा. सुनो, गो एक्सप्लोर करो. और जॉनरास भी है. लाइफ बहुत बड़ी है यार, बहुत सारे टॉपिक है तुम्हारे पास The डिस्कस करने के. problem with us is कि people think we are just making relationship content, but it is not just relationship. The podcast is like 1 or 2 hours long, and the thing is there are a lot of things to learn and inspire from. There is music, there is acting, there is something which is different than relationship, which is trading, money, and gaming. There are a lot of podcasts. Then people, फाइनेंस. finance is there, and people won't see this content until and unless they go down or discover more things. Their energy to consume the content ends over there, and I think सबको so. मसाला चाहिए. That's where people are. And as he said, ki like yeah, keep trying, keep doing, keep pushing, हम्म. and just keep enjoying. And I think so. If you want to grow, then bro, list it down. लिखो, एक टारगेट बनाओ, लिखो कब चाहिए कब नहीं चाहिए, एक साल में कितना चाहिए और एक साल में तुम लोग कितना करते हो. I'll give you a best tip, best advice for everyone who is watching. Write your things down. I had a paper over here. हाँ. ही हैड दैट पेपर 2 या 3 साल पहले ही रिटन डाउन की ये चाहिए ये चाहिए. हाफ ऑफ थिंग्स आर डन ना, राइट.
हाँ, 90% is done. हाँ, Now टाइम टाइम लगा वो कंप्लीट करने में, लाइक 3-4 साल लग गए, बट ही वॉज डूइंग इट, कीप ट्राइंग। अगर रुक so गए ना तो तुम लोग का वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो जाता है, लाइक ये दिस खत्म हो write टाइप, जाए कि ये तुम। दिस टाइप मतलब कि जैसे मैं बनाया। this type हाँ। and keep it in front of you. Okay, and एक टाइम पे एक गोल उठाओ, एक टाइम लिस्ट है ठीक है, पर नंबर वन क्या है, नंबर वन इजी है, तो वो इजी खत्म करो और नंबर टू पे जाओ, फिर वो नंबर टू को स्ट्राइक मारो, फिर नंबर थ्री पे जाओ, फिर नंबर थ्री कंप्लीट करो, उसको स्ट्राइक मारो, फिर नंबर फोर पे जाओ। हम्म, तो ऑर्गेनाइज इन सच वे यू नो कि ये कॉन्फिडेंटली ये होने वाला है। कभी कभी क्या होता है मालूम है, एक चीज करने में तो तीन चीजें खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली फट से। तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू, make a list of things that are necessary for you, and action is very important. Action करते रहो, एक्शन डिनोट करते रहो, और कैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसको एनालाइज करके और एक्शन डालो उस पर। कंटिन्यू हैमरिंग द स्पॉट until and unless you find the gold. तुम मतलब एक चीज अगर तुम लोग जाओगे एक के पीछे, तो बी ऑब्सेस्ड विद द थिंग दैट यू वांट, हम्म, मेक योर आर्ट वर्क सो क्रेजी। अभी तुमने मेरे को बोला कि हाँ हाँ, कौन कौन एडिट करेगा, दैट थिंग आई डिडंट लाइक, बिकॉज यू गो ऑन अ फुल फ्लेज एंड फुल स्केल कि घुस यू जाओ। डू इट, घुस जाओ, एडिट करना सीखो, उल्टा पुल्टा करो, काटो, खराब करो, गिरो 10 बार, 10 बार उठो, किसको किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ऑर्गेनाइज करो। अभी रिसर्च फाइनल, करो। you guys won't even think कि like you might think कि we are doing very well, but we know how we are doing and we know how we are sustaining. There are having financial issues like okay, हम्म, हम लोग के इस पे ब्रांड्स दिख रहे हैं तो लोग बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रांड्स आए हैं, बट दोज आर नॉट ब्रांड्स, दोज हम्म, आर समथिंग लाइक बाटा सिस्टम थिंग कि तुम लोग ये करो हम लोग ये करेंगे, और हम लोग को पैसे वैसे नहीं मिल रहे, हम लोग वैसा है। हम वी लोग आर जस्ट चार डूइंग चार बजे, हाँ लाइक ना। 4-4 बजे तक हम लोग एडिट करते रहते हैं, लाइक 2-3 घंटा ही हम लोग सोएंगे। और से लाइक मैक्सिमम विल स्लीप इज लाइक 4 4 to 5 आवर। पूरा एंड दिन काम चालू रहता है, डे एंड नाइट। वी आर नॉट सेइंग कि लाइक ये बुरा गंदा ही करो तुम लोग, और या फिर ये नहीं करो, because that is our timetable. It is like when he's sleeping I'm awake, and when I'm awake he's sleeping. So वो ऐसा उल्टा फुल्टा चलता रहता है, जो वो काम करता रहता है तो मैं सोता है, और मैं काम करता रहता है तो वो सोता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम देते रहते हैं। अगर उसको कुछ पोस्ट करने को लगाने का मेरे को, तो आई लेट इट एंड आई मेक श्योर दैट दैट वर्क इज डन and that work is gone. Otherwise, I have to research something, write something, or make something up on the podcast. I'll make sure that that work gets done by today itself. Uh, we have to send Jagriti and you to sign things if you remember, Sanskar. So yeah, so that is there, and I think so. You should keep pushing until you see the light. See, माइक ड्रॉप, माइक at the ड्रॉप। at the end, yeah, mic drop was there, but at the end, it's just something. This is very very, it will be very emotional and spiritual for you guys. मतलब तुम भी एक रोशनी हो और भगवान भी एक रोशनी है, ठीक है। तुम्हारा काम है वो कर्म करते रहना जब तक भगवान की रोशनी तुम्हें ना दे। That God's light can be anything, any form of success, any form of enjoyment or like peace or bliss, whatever it is. That is your end goal. Just keep pushing. जब तक दिखे तुम्हें तब तक पुश करो, पुश करो, पुश करो। समझो कि तुम्हें भारत से श्रीलंका जाना है और तुम्हें दो देश जोड़ने हैं, तो काम करते रहो, वो पत्थर फेंकते रहो, वो राम सेतु बनाते रहो, जहां तक तुम्हारी स्किल सेट सबके साथ जुड़ जाए और यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड या मैं अब सुधरना चाहूँगा इसके बाद एक्चुअली। सो नहीं नहीं, हम लोग को भी मजा आया, लाइक आई वांट टू सी यू गाइस कि क्या कहाँ तक पहुंचोगे तुम लोग, कितना तुम लोग का भी See, इवॉल्वमेंट है। I don't. If you guys don't make out, I am coming after your heads. Okay, है I am coming after your heads. I'm gonna make sure that ए I'm वन gonna मिनट व्हाट यू आर सेइंग मेक आउट। nahi, coming after your heads. हाँ हाँ
मतलब तुम लोग का मुंडी तुम हाँ लोग वो का समझ गया। मुंडी काट के ना तुम लोग को फटके देगा मैं अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो बिकॉज यू हैव कॉल्ड अस हियर आई वांट यू guys like in next 2 years to have a studio and making content on your own being big making thing अभी इतना नॉलेज दे के भी अगर तुम लोग काम नहीं करोगे ना मैं इधर से कप फेंक के यूपी मारेगा मैं यूपी में फेंक अरे के ऐसे लखनऊ में टच वुड टच वुड। लखनऊ के अरे डायरेक्शन में नहीं भैया, लखनऊ जाने की जरूरत ही नहीं, पुणे ज्यादा दूर नहीं है वैसे। नहीं, लखनऊ मार, मतलब अरे लखनऊ में मारिए। अरे लखनऊ तो मेरे को मैं लखनऊ में अरे बॉम्ब बॉम्ब डाल दूंगा मैं अच्छा मेरे सीधे नहीं, मेरे से क्यों कुत्ता से क्या हाल है? दोनों दोनों एकदम हॉट डेस्टिनेशन में, माय गॉड अरे यार। अरे ओ नो। मेरे ही पीछे पड़ गए सब। बट नो, लाइक उनो कीप रिवर्स। डूइंग इट जो कर रहे हो तुम लोग अभी। बट करो करो हाँ, keep pushing until and हाँ, unless you see some improvement रुको मत कहीं पे कीप पुशिंग कहीं ना कहीं तुम लोग को कुछ ना कुछ आएगा कीप कहीं पे तो एक्सपेरिमेंटिंग पहुंचोगे तुम लोग। सी अभी यहाँ कीप पे हो, एक हाँ पॉइंट के कीप बाद यहाँ पे पहुंचोगे। keep Let experimenting if you guys have मतलब I don't know if it is a great thing or not but if you guys could get us on the show then I think so you can get more bigger people and bigger celebrities also. It's just a matter of approach, speech, and emphasis on words. Because बोलते बोलते गलती से कुछ फ्लो में ना बोल देना मैं क्या मैं मजाक में ले लेता है ठीक है बट कभी कभी क्या होता है मतलब मैं गलती से कुछ बोल दोगे कोई ऑफेंड हो जाएगा तो मेक श्योर दैट यू टॉक टू देम इन अ मैनर कि you make them understand how important your show is for them and for their growth not them they should not feel that they are important for your show and your growth तो वो एक दर्जा आना चाहिए कि हाँ बाबा वी आर समथिंग एंड वी आर क्रिएटिंग समथिंग ईगो नहीं वो सेल्फ क्या बोल सकते हैं एक सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वैल्यू। अवेयरनेस और सेल्फ वैल्यू है कि हाँ ये है और वो क्रिएट करते रहो नाउ आई डोंट नो हाउ मच of people are gonna see this or like people are gonna come and visit you because we are not sure. It will just happen. We have posted the story. People might find you out and they might come. Alright, let's see. Let's hope. But सॉरी that सॉरी। oh, someone's iPhone is ringing, bro. We also have But iPhones. yeah, अरे नाइस नाइस नाइस। you have an हाई फाई iPhone. हाई फाई हाई फाई। We have a story behind iPhone. It's वी not हैव an स्टोरी iPhone. बिहाइंड आईफोन। It's not an We iPhone. have a story. I also have an iPhone, मतलब कि ये तो मैंने क्या कहते हैं अपने पैसे से बनाया। But like I'm just saying for another day. But like yeah, I हाँ had fun. I had amazing time. I think so. I gave. We had planned 30 minutes, but we went beyond 30 एक minutes. एक घंटा हो गया, अभी हम लोग एक को घंटा रील हो गया पोस्ट एक। करने में टाइम जाएगा मोस्ट ओके प्रॉब्ली। ओके तो जल्दी छोड़ देता हूँ तो बट उठा। बट व्हाट आई से इज कि ना बी रिस्पांसिबल अबाउट कि तुम लोग गेस्ट को बुला रहे हो। द थिंग व्हिच आई डिडंट लाइक अबाउट वैभव इज कि लाइक वैभव इज लाइक कि कब आ सकते हो आप, ये टाइमिंग बी क्लियर कि नहीं मेरे को 4 बजे आप ये टाइम पे थर्सडे को आप आ सकते हो, फ्री बताओ, लाइक बी क्लियर कि अच्छा ये टाइम पे अवेलेबल नहीं, ये पे करो। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज अभी हम लोग का काम रहता है तो वी कांट गिव यू टाइम हाँ ऐसे ऐसे। और मोस्टली सबका ऐसा ही होता है कि पीपल आर इंडल्ज इन देयर वर्क। तो आप अगर क्लियर हो कि नहीं मैं ये टाइम पे ये इसमें हम लोग का अवेलेबल है, कम एंड वील टॉक। तो ऐसा होता है। अभी हम लोग भी गेस्ट को जब बुलाते हैं वी आर लाइक श्योर अबाउट कि हाँ ये टाइम पे अगर आपका अवेलेबल नहीं है, सैटरडे नहीं हो रहा है तो संडे को ये टाइम पे, संडे नहीं हो रहा है तो हम लोग अगले वीकेंड फ्राइडे को अगर आप फ्री हो कभी हो ये टाइम पे आओ एंड विल डू इट। मैं हर 3 दिन, See, मेरा ऐसा था I'll कि give हर you. 3 दिन में मैसेज करता था। I'll give you one more offer. Okay. ओके By December, हाँ if you keep continuing your work and increase to about 1,000 subscribers and an audio listening of good audio listening of 500 to 1,000, I'll try to talk to Spotify and get you in a cohort where you can get your boosting and you वी can विल be लर्न मोर अबाउट। हाँ officially with Spotify. So yeah, if you want to work hard and show me that you can, या हाँ श्योर। and then I can एंड get क्या you बोलते in. हो? हाँ क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा अपॉर्चुनिटी है। भाई नाइस इसको नाइस। छोड़ेंगे नहीं। बट ऑल्सो लाइक ट्राई टू बी मोर परफेक्शनिस्ट अबाउट योर वर्क कि हाँ काम को ऐसे बोलते हैं ना कि कामयाबी को चेस करने से अच्छा क्या बोलते हैं, काम व्हाट इज एक दैट। पूजा है।
हाँ, उसको काम एक पूजा की पूजा तरह। है, रिस्पेक्ट योर वर्क, बट क्या बोलते हो उसको, काम सक्सेस को के, मतलब सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस चेज के पीछे भागो। एक्सीलेंस के एक्सेलेंस, पीछे भागो। हाँ हाँ। एक्सीलेंस के सक्सेस पीछे खुद भागो। झक मार के आता chase है। हाँ। chase something which will make you a professional. हम्म। Now, professionalism comes with behavior and your ethics. तो वो चीजें अगर लानी है तो वो लाना सीखो, and then you'll automatically become successful, because once these two things are there, you'll be perfect in a way, and once you're perfect, the success is automatically bound to come. थैंक यू सो मच आने के लिए। और यहीं तक हमारा था, क्योंकि इनको अभी काम भी जा रहे हैं, 2 बार मेरे को बोल चुके हैं कि क्या कहते हैं काम है। तो दैट इज फॉर टुडे गाइस। अगर अच्छा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इनकी सारी डिटेल्स मैंने अपने क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके चेकआउट करिए। इनके इंस्टाग्राम पे भी जाके इनको फॉलो करिए और इनके चीज़ों को देखिए। मैं तो इंस्पायर्ड हो चुका हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा। मैं और शिवन तो नहीं, आप भी थोड़ा देखिए, शायद से आप भी इंस्पायर्ड हो जाए। हाँ, और जितने भी अगर थोड़े से डिप्रेस टाइप के हैं या सिंगल है, तो वो उनकी सारी सारी रील्स पक्का देखे, क्योंकि वो थोड़ी हाँ, इंस्पायर, मेन चीज़ वो है। रिलेशनशिप की हम लोग एक एडवाइस दूंगा मैं, अगर प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़ो मत। उम्र ये अभी 80 क्या, लाइक 15 से 25 के एज में हो, और अगर मिल जाता है कोई, बट ही वो अगर वैल्यू कम करना तुम्हारा स्टार्ट करता है कि भाव नहीं दे रहा है, लाइक कि नहीं ये तो कोई और तीसरा चौथा और भी मिल जाएंगे तेरे जैसे मेरे को, तो जस्ट वॉक ऑफ, कि नहीं ठीक है, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वो पावर रखो कि मैं छोड़ के चला जा सकता हूँ उसके साथ। बी दैट रणबीर कपूर की शादी में से भाग सकते हो तुम। माँ माँ बाप ने तुम लोग को एक नाम दिया, वो नाम है ना, ऐसा वैसा, दहाड़ना चाहिए आसमान में कि हाँ भाई, वैभव नाम का कोई है, या संजू शिवम नाम का कोई है। शिरेन नाम हाँ, का कोई, या so that should happen. So keep that in mind, and thank you for calling us. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, मेरे को तो सो बहुत दैट इज मजा आया फॉर तुम टुडे लोगों से गाइस। बात थैंक करके। यू। अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और किसी नए, अगर Sure, पता चला sure. किसी नए क्या कहते हैं गेस्ट के साथ। सो दैट